अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इनसाइड NSG। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। When India confronts terror and all other options run out, one organization is called upon as the last resort. They know that they could catch the first bullet in the air, land, or water. But they will protect. Their reputation is hard-earned, with blood and sacrifice. These are commandos that come together from the different forces of India. The police, the Central Armed Police Forces, the Army. They are the National Security Guard. From the NSG campus have emerged some of the greatest heroes of India, the Black Cat Commandos, who have fought terror in many battlefields across the country. Of these, perhaps the most prominent in public memory is 2611. And the supreme sacrifice made by commandos of the NSG. Their legacy is protected at NSG even today. This sofa was recovered from the Taj Hotel in Mumbai, where some of the fiercest fighting of 2611 took place. As a new entrant to the National Security Guard, Prasenjit Tomar stands humbled in front of the bullet-ridden reminders of that battle. His first day as an NSG commando began on this very sofa. He recalls those events and the words of his commanding officer. The place that you are sitting is, we call it cradle of sacrifice. When you are sitting here, you must realize that you are guarding a legacy. But becoming a Black Cat Commando is not for the faint of heart. NSG pushes its men to go beyond the brink. Beyond the levels of human endurance. Beyond their deepest fears. These training grounds of NSG turn men into lethal weapons. It is here that they learn to fight and how to win. जयपुर हाईवे है ना, उस साइड से लेना। जयपुर हाईवे से वो गेट नंबर 1 वहीं पे आएगा।
3 times a year, the National Security Guard conducts trials for new commandos. Prasenjit Tomar is among the many hoping to get selected. I'm on my way to join the training center NSG, and there my 3 months probation will start. Only if he makes it through the 12-week commando conversion course, and then a further 6 weeks of unit induction, can he earn the black uniform of the NSG. I belong to Aligarh, where I was born and brought up, and done my schooling there. Education-wise, I'm a mechanical engineer. I've done my engineering from Aligarh Muslim University. यहाँ ट्रेनिंग NSG draws its manpower from the police, army, and paramilitary forces. The almost 800 candidates trying out are all experienced and toughened personnel. They will have to be, if they intend to qualify for one of the toughest commando courses in the world. जैन सर सीसी के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। अपना लगेज गाड़ी में लेना है और बस में बैठना है। The screening week is crucial. Half these candidates will be eliminated within this period itself and not even make it to the 3-month commando conversion course. Tomar is lucky. He meets up with acquaintances on the first day itself. Hi Sandeep. कैसा है भाई? Good. जैन सर. Hi. मेरे तोमर सर. How are you? दीपक यार. जैन सर कैप्टन सर. Hi. मेरे तोमर सर. तू पहले से गंजा हो गया है? हम तो मैंने सोचा सर करवा लेता हूँ तो। बॉलिंग का क्या सीन है सर? शाम का बता रहे हैं, अभी तो कुछ टाइम तो बताएंगे शाम को करें। The first week reveals how competitive entering NSG is. The Training Center of National Security Guard is a premier training institute of the country which is mandated to train probationers drawn from the Indian Army and various central armed police forces for induction into the National Security Guard. The NSG has got set physical standards. You clear them, you will be a part of NSG. I will be very honest that I was not very sure of it, but I did clear them. Aside from physical tests, firearm proficiency is also crucial. I was given an SAS rifle and we were made to fire from 25 meters. I made a group of 3 centimeters from in the screening test. Tomar makes the grade. To start the course, there is a filtration or a screening test which takes place. And there are a lot of commandos who are not able to pass at the screening stage itself, and then perforce we have to send them back. NSG is a force that deals specifically with terrorism in all its forms. At the National Security Guard headquarters, the senior most officer is the Director General. NSG is the premier urban anti-terror force of India, and we are called upon to carry out operations which are of extremely critical nature. The primary role of NSG is as a anti-terror force to deal with terror in all its manifestations. In some respects, that's why it's called as the force of last resort. And moreover, by our very definition as a federal contingency force, we are expected to do operations which are extremely of serious nature when there is a serious threat to national security as such. The NSG campus at Manesar is spread across about 1,600 acres. Across its many training grounds, counter-terror tactics are practiced and perfected. These innovative commandos train without most of the equipment other commandos use. They practice parkour as a technique to enter buildings when conventional ingress is difficult. NSG is not only based here in Manesar, there are regional hubs across the country. Wherever they are located,
The National Security Guard has become like a well-oiled machine. The one-week screening test is over. Only about half the men qualify for the commando conversion course. Candidate Tomer is among the chosen few. They wear the uniforms of their parent units. Different colors and badges show the diversity of the forces that enter NSG. NSG is a very happy mix of the best elements of the army, the paramilitary and the police. But this is a unique experiment where you have a good mix of all three, and that's, I think, ultimately the USP of this organization. At NSG, there is little time to waste. A short welcome address, and the men are marched off. After the opening address, we were made to see what all weapons we will be using and what all weapons we will be given training on. Being a counter-terrorism force, the weapons used at NSG are state-of-the-art, comparable to the best special force units across the world. We knew that the training is going to start from today, and we knew that there is going to be some sort of welcome for us. At NSG, welcome has an entirely different meaning for an aspiring commando. NSG veterans call it the ice breaking. Crawling, push-ups, I don't know what not I did that day, and I think it went on for like 2-3 hours. The ice breaking is only a taste of things to come. From this point on, the commando conversion course will begin in earnest. For the remaining 11 weeks, Tomer and the other trainees will be pushed to the brink. NSG is divided into 3 main pillars. The counter-terror force consists of units that handle terrorism in any scenario. This includes counter-hijack and hostage rescue missions on land, sea, or air. The Close Protection Force protects select VIPs across India. The third pillar is the state-of-the-art bomb detection and disposal squad and the National Bomb Data Center. All of NSG's operations are fraught with danger. The Close Protection Force's work is no exception. They protect high-risk VIPs at extreme risk to themselves, earning them the nickname, the Bullet Catchers. The word bullet catchers originates from the team's unparalleled ability to interpose themselves between the threat and the protective while neutralizing the threat. As safety and well-being of the commando is our priority, our team is equipped with state-of-the-art weaponry and specialized equipment. We also continuously focus on enhancing our performance and updating our capabilities to stay ahead of any potential threat which may come in future. The Close Protection Force commandos are well aware of the dangers of their job, so they ensure that any threat is neutralized before the situation goes out of hand. The men have survived the rigorous 12 weeks commando conversion course and are ready for induction into the different departments of the NSG. Tomer is allotted one of the premier counter-terror units. This unit has been decorated with 3 Ashok Chakras. That is the highest gallantry award during the peacetime. And so I opted for it, and I was just lucky enough to get it also. आप लोगों का स्वागत करता हूँ. आप लोग यहाँ पर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए आए हैं. The upcoming 6 weeks of counter-terrorism unit training will make the past 3 months seem like a cakewalk. अभी आप एक स्पेशलिस्ट यूनिट में आ रहे हैं. इस देश का इलीट काउंटर टेरर यूनिट है. हमारा इतिहास खून से लिखा हुआ है. और आज इस ट्रेनिंग करने के बाद जब आप ब्लैक इन होंगे तो आप उस विरासत, उस लेगेसी के कस्टडियन होंगे. इसके लिए आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप यहाँ पर आपके दाएं बैठे हुए उस्ताद जो सिखाएंगे उसको बहुत लगन से,
बहुत मेहनत से सीखेंगे। जैन सर, समय कम से। This training officer and his team would be responsible for their induction over the next 6 weeks. So how well are you performing in training center? So I was performing well, sir. I have cleared all my tests and excellent, sir. Excellent. Sir. So I hope you know here the standards are much different and much Yes. higher. So the level of physical exertion is a lot more here. You will be tested on much difficult grounds. Sir. And you will have to push yourself harder here. ठीक है everybody, march on. Yes, sir. Jai. Among the first lessons taught at a counter-terror unit is how to be part of an intervention team. दोनों आँख खोल के ऐसे. Each team consists of about 6 members, working in perfect synchronicity. A single intervention team is the first building block of any counter-terror force. Each member is also a specialist in one particular skill: demolitions, communications, medicine, sniper marksmanship, among other skills. They are generally supported by a dog and handler from the NSG K9 squad. Each team member carries over 20 kilos of kit and protective gear into battle. In the first week, the inductees are drilled in various intervention simulations. Their every move is closely watched by their training officer, throwing new surprises at every turn. A can of tear gas is a new challenge. Tear gas causes intense irritation in the eyes and a bad burning sensation on the skin. शायद जिस सर ने जलाया उसको कुछ नहीं I हो. mean, nobody ran. You know, this whole group is good that way. Later that afternoon, their training officer opens a can of tear gas for Tomer. It's the first time he's holding a weapon of this nature, but it won't be the last. The NSG training regimen is rigorous, and not just for two-legged commandos. There is an entire contingent on 4 legs, the K9 Dog Squad. NSG soldiers are called Black Cat Commandos. Here, black cats and dogs are in partnership. K9 Commando Google believes that he is as good on 2 legs as his handler. Google is a highly trained sniffer dog and used to detect explosives in the overhead luggage rack of aircrafts. But it is the Belgian Malinois that NSG prefers while going into operations. This is Drona, the K9 Dog Squad's star commando. Drona is the first commando into action. Drona is now a senior in the K9 squad. And like humans, he also uses technology to improve his commando skills. The team relies on the K9 visual system that the dog wears. The goggles provide the handler a visual of what Drona sees. The handler speaks to Drona through a device in the dog's ear. Good. Stay. Drona back. Back. Stay.
In this second exercise, Drona will go out of visual sight of his handler to hunt down a target almost a kilometer away. Right, go. Go, go, go. Drona is the full package, among the best weapons of the NSG. Coming up, the inductees are pushed to the limits of human endurance. Sleeplessness, pain, and exhaustion takes a toll. In the vast National Security Guard training grounds, commandos perfect counter-terrorism tactics. NSG has the only counter-hijack force in India. Their commandos practice hijack scenarios in the on-campus aircraft. Timing is paramount. FIT move, MIT move. Roger. It can make the difference between life and death during real operations. MIT go. Coordination with extreme precision. That's the key. Aside from airline hijacking, there are other threats that can come from the sky. Drones can disrupt air travel. They also can deliver narcotics and explosives payloads, or assist in attack or surveillance. 81 drone in range. 81 engage. The NSG has the commandos and equipment to counter such tactics. Drone killer hai bhai. The drone killer weapon system does not fire bullets, but emits invisible radio waves. It will neutralize a variety of unmanned aerial vehicles. Drone down. Over. The NSG top brass constantly reviews the technological preparedness of the force. They ensure that counter-terror activities are supported by the right kit. NSG does operations which require specialized weaponry, special equipment, and also special protective gear. So we have to keep ourselves really updated on the kind of equipment we have. Today, NSG is equipped and prepared for diverse combat scenarios. Although it is the man behind the machine always that matters, but equipment also plays a very critical role. That small nanosecond difference or that small extra effort, it can, in times of combat, it can mean the difference between life and death. So his operational effectiveness gets enhanced, his confidence increases, and his capabilities to fight also get greatly increased when he is armed with the best possible equipment. So that when they go out to fight for the country, they do not lack anything that is required by them. The induction training at the NSG counter-terrorism force has gone into overdrive. The trainers are turning on the heat. इस एक्सरसाइज का मकसद था आपका फिजिकल और मेंटल दोनों टेस्ट लेना. The first challenge for the inductees is to be put under physical and mental stress for 48 hours, non-stop. They are given various tasks throughout the day. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Even the whole night is spent active. The next morning, the men have been without sleep for 24 hours, and they still have 24 hours to go. Despite feeling tired, I was excited about our next task, firing the sniper rifle. Sniper.
but our instructors were meant to put us under stress. So before we fired, they made us do 50 knuckle push-ups. This was the first time in my life that I was going to fire a sniper rifle. Detail line position. I wanted to get it right. Detail bar. But I was still breathless and panting after the push-ups. The slightest shake will affect the shot, and targets are usually far away. In this case, it was at 400 meters. 400 meters bhai. It was such a happy moment. I really felt a sense of achievement. But honestly, at that time, I could only focus on the next 23 hours of stress that was coming our way. Snipers are essential in the NSG arsenal. These are highly trained marksmen who can hit pinpoint targets at extremely long distances, sometimes up to a kilometer away. State-of-the-art shooting ranges at NSG turn commandos into crack shots. Targets in NSG depict a terrorist hiding behind a hostage. It's little wonder that the NSG is called the Zero Error Force. Meanwhile, the inductees continue with the 48-hour stress test. By mid-morning of the second day, they are flipping tires in 40+ degrees heat. I don't know how much that tire weighed, but believe me, after a sleepless night, flipping it for almost 800 meters was hard. It was difficult to think that I had still over 20 hours to go. But in moments like this, I feel it's best to just focus on the next task and not to let your mind run and panic. By the evening, the men are allowed a short break. अभी जाग रहे हैं. Keeping our body fit during the training is very important, and I personally feel that taking care of our feet is of utmost importance, because 90% of the time during the training our shoes are on. हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल यार काफ़ी एक मज़े की वीडियो थी, बहुत मज़े की वीडियो है. एक ट्रेनिंग देखना, वो भी एक आर्मी की, वो तो बहुत ख़तरनाक होता है. लेकिन ऊपर से भाई ये हैं भी एक कमांडो. जो कमांडो की ट्रेनिंग होती है ना, वो बहुत हार्ड होती है. बाकी जो एक आम आर्मी या एक कमांडो में, इनमें जब फ़र्क करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. इनको इतना ज़्यादा एक जगाना या इनके से ऐसा टेस्ट लेना, स्टार्ट होते ही अगर 100 बंदा आता है तो उसमें से 50-60 या इतने बंदे जो है, मैं बोलता हूँ कि ऐसे ही निकल जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं. इतनी ख़तरनाक होती है. और जब स्टार्ट होती है, एक मिसाल अगर समझ लेना कि 300-400 बंदा है, तो एंड लेवल तक आते आते कोई 20-30 बंदे बचेंगे चुनवें, जो जिनके अंदर एक कितनी पावर थी कि जो हर चीज़ को सह सकते थे. और वो यहाँ भी यही चीज़ें चल रही थी. ऐसे टेस्ट होते हैं, जब वो फेल होते हैं तो तब उनको जाना ही पड़ता है. लेकिन ये बहुत हार्ड थी भाई. नहीं वाकई भाई, एक ट्रेनिंग भी काफ़ी मुश्किल थी. और ऊपर से जो लड़के आते हैं ना, वो फिट आते हैं, वो मतलब कि बूढ़े नहीं आते या कोई एक उनकी एज ओवर नहीं हो जाती. तो वो उनका एक टारगेट होता है कि हमने ये चीज़ ज़रूर करना है. तो इसलिए भाई जब यंग होते हैं तो एक प्रैक्टिस और हर चीज़ वो एक मैनेज कर लेते हैं. स्टार्ट से होता है एक ट्रेनिंग में मुश्किल, लेकिन जब उनकी एक डेली रूटीन बन जाती है ना, तब एक और मज़ा आता है. अब पारा SF पे आ जाए, कमांडो पारा, उनकी तो भाई बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग थी. वो तो रात को जगाना और हर चीज़ करना. लेकिन अभी तक इनकी एक मतलब कि सिंपल तो नहीं बोल सकते, हार्ड है काफ़ी, क्योंकि इनके ऑपरेशन और पारा SF के ऑपरेशन में कुछ फ़र्क भी लगता है. क्योंकि हमने तो भाई ज़्यादातर NSG मतलब कि स्पेशल फोर्स
एक इनको बड़े बड़े मिशन या ऑपरेशन या एक हमने एक सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी होती है वो एक अलहदा होती है, या उन सीएम को देते हैं सिक्योरिटी, उनके साथ हमेशा हमने देखा है एनएसजी कमांडो को। और ज़ाहिर बात है उनके साथ तो ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये कि आप ट्रेनिंग के ऊपर आ जाएं तो भाई वाकई बहुत टफ है इनकी। अब सबसे ज़्यादा वो देखा जब आंसू गैस उन्होंने की थी वहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे जाके फेस करनी होती हैं, मतलब कुछ भी कोई पता नहीं होता कौन सा कैसा मामला जो है ना वो हो जाता। खासकर अब आप देख लें वो 26/11 वाला जो हुआ था, या और बहुत सारे इस तरह के जो अटैक, वहाँ पे इनका पहुँचना ज़रूरी होता है। और जब आते हैं ना तो फिर मज़ा आता है आगे जो ये काम करते हैं। लेकिन ये कि इधर ट्रेनिंग पे आ जाएँ तो भाई वाकई उनकी एक टफ है, और यहाँ पे आना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन ये कि कोशिश ज़रूर करनी चाहिए इस तरह की फोर्सेस में अपने आप को ले जाने के लिए, या क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे भी इंसान ही कर रहा होता है, तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो ज़रूर इस साइड के ऊपर थोड़ा मूव करना चाहिए। क्योंकि ट्रेनिंग के एक तो होती है टफ हो या जैसी भी हो, लेकिन ये कि एक मज़ा आता है क्योंकि आप अपने देश के लिए इतना बड़ा स्टेप ले रहे होते हैं। लेकिन ये कि इनसाइड भाई एक माहौल बहुत एक कमाल का होता है, जिस तरह एक अच्छे ऑफिसर्स और एक विजन होता है कि हमने मतलब ये अचीव करना है। और आगे जिस तरह वो डॉग्स वगैरह की साथ ट्रेनिंग होती है डॉग वाले तो बहुत हार्ड है भाई, उनको भाई एक ट्रेन करना, हायर करना साथ साथ, ये भी एक बड़ा टफ काम होता है क्योंकि उनकी आगे जाके ज़रूरत होती है। जिस तरह आप देख लो कि वो ऑपरेशन में पहले उसको भेजा है एक, फिर एक जो आम चीज़ लगी है जो एक ड्रोन को जिस तरह उन्होंने गिराया है ना, ड्रोन किलर था। ड्रोन किलर भी इस तरह भाई पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखे हैं कि भाई इस तरह बगैर कोई गोली चलाए जो है ना वो ड्रोन को नीचे गिराना, एक सिग्नल्स के ज़रिए, एक शुआओं के ज़रिए जो है ना उसको नीचे लेके आना। मतलब हर तरह की आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है ना उनको ट्रेनिंग मिलती है। बहुत ट्रेनिंग भाई, एक कुछ अब देखो ना, एक हमने वीडियो में भी देखा है, ये तो एक सिंपल सी ट्रेनिंग है, लेकिन अभी जो इनकी प्राइवेट होगी ना वीडियो के बगैर भी, वो भी एक मतलब कि शो नहीं करते, वो तो एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। अब डॉग्स पर आए तो डॉग्स भाई काफ़ी एक उनका किरदार होता है आगे, मतलब कि जो भेजना, एक खोज करना बंदे की, जहाँ पर अटैक करना हो या जहाँ उनको ढूंढ कर देना हो चीज़ें, तो वो भाई एक पूरा फौजी का किरदार अदा करते हैं। और उनको भाई एक सिखाना भी काफ़ी होता है एक चीज़ें। अब स्नैपर पर आ जाए तो भाई वो भी काफ़ी एक हार्ड काम है, लेकिन भाई ने काफ़ी भाई एक पहले फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया और फर्स्ट टाइम भाई वो जाग भी तो उनको 24-23 घंटे हो गए थे, वो अभी जाग ही रहे थे। क्योंकि जब ये होता है ना ये वाला चैलेंज, आपको भाई 48 घंटे 2 दिन जागना है। एक दिन बंदा क्या एक रात जाग ले तो बंदा सुबह कुछ कर नहीं पाता, लेकिन उन्होंने 48 घंटे जागना होता है और उसमें ऐसे ऐसे मिशन देते हैं कि बंदा तंग रह जाता है। ये ऐसे ऐसे मिशन ना, एक हॉस्टेजेस के हवाले से एक ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जिस तरह मतलब किसी भी एक आदमी को उन्होंने पकड़ा होता है और साथ थोड़ा सा उसका सर नजर, क्योंकि जिससे जरूर वो बात कर रहा था, और वहाँ पे टारगेट सिर्फ उसका माथा, सर और आँखें, ये यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा होता है। हाँ, टांगों के ऊपर भी अगर ऑप्शन मिल जाए, लेकिन ये कि वहाँ पे एक निशाना बनाना ये भी। और अब 400 मीटर से आप देख लो उन्होंने निशाना लगाया, वो एक मटका जो फोड़ा है वो भी यार 400 मीटर थोड़ा नहीं है कि वो कितनी दूर जाके टारगेट अचीव करना। और उसके अलावा प्लेन में अगर ऑस्ट्रिचेस हैं तो मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ हर तरह उनको जो भी एक मुश्किलात आएंगी, जो भी एक लाइफ में हो सकता है कि ये चीज़ें आगे आके चैलेंज बनेगी, तो उसके लिए वो फुल ट्रेन होते हैं भाई। नहीं वाकई जो एक मतलब कि उन्होंने भाई एक जब एक स्नाइपर की है ना मतलब कि ट्राई, तो पहले उनकी काफ़ी उन्होंने ठोकर टिकाई की है कि आप डंड वगैरह मारे, तैयार हो जाए 50 भाई पुशअप कर आगे फिर स्नाइपर चलाना और माइंड को रिलैक्स कर। अब स्नाइपर भाई एक बच्चों का तो काम नहीं होता, वो तो बहुत एक तरीके से एक मतलब कि रिलैक्स होकर बंदा चला सकता है। तो भाई ने वाकई करके दिखाया। ज़ाहिर बात है जो स्नाइपर टारगेट होता है ना वो होता भी थोड़ा दूर ही है, ज़ाहिर बात है दूर बैठ के करना होता है। वो हमने कारगिल वाली मूवी में नहीं देखा था कि वो एक साइड के ऊपर ही बैठा हुआ था और उसने जो है ना मतलब, लेकिन ये कि बाद में उसका खात्मा तो हो गया था, लेकिन ये कि वो साइड पे, और अक्सर हम मूवीज में भी देखते हैं कि स्नाइपर यार ये बैठे ही ऐसी जगह होते पता ही नहीं चलता कहाँ है वहाँ पे एक दिल थाम के बैठना, मतलब बड़ा एक
डिफरेंट सीन होता है इनका। बिल्कुल जी, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक।